Hello everyone. Today we are going to see question number 39 of our NEET mock. So question number 39 is telling us the magnitude of electric field at point P will be lowest in which of the following configuration. Now in our option we are given four configuration. बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे सबसे ज्यादा लोएस्ट कौन से वाले कॉन्फ़िगरेशन में होगा. We have our first configuration with one positive charge. We have our second configuration with one negative and one positive charge. We have our third configuration with one negative and two positive charges. We have our fourth configuration with two positive and one negative at the center. हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लोएस्ट किस में रहेगा. Now here our correct option is option number 2. Now let us see how we got this answer. Moving to the solution part. So consider configuration 1. I'm going to consider my configuration 1. I have to find electric field intensity at point P. I have one charge that is plus Q. Point P is at a distance of 2a from my charge plus Q. Electric field intensity is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. That is E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon, अभी R का मतलब distance. Here our distance of point P from the charge is 2a, that is 2a the whole square. I'm going to get 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon 4a square. I'm going to say 1 upon 4 pi epsilon naught is a constant that is K. 1 upon 4 को मैंने किया तो that is 0.25. I got the value E1 as 0.25 KQ upon A square. तो ये हम लोग को पहले का मिल गया आंसर. अभी 1 upon 4 pi epsilon naught को मैंने कांस्टेंट क्यों किया? बिकॉज हर एक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे को वो आने वाला है. सो कंसीडरिंग इट एज अ कांस्टेंट. अगर सॉल्व करने जाए तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो कांस्टेंट को हमने अलग ही निकाल दिया. वी गॉट आवर आंसर एज 0.25 फॉर E1. Now moving to our second configuration, considering configuration 2. Now in our second configuration, if you can see, we have one positive charge at one end, we have one negative charge at the other end. Point P दोनों के बीच में है, मतलब it is placed at the equator. Equator पे place किया हुआ है. अभी डिस्टेंस हम लोग का क्या है? माइनस क्यू का डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल ए, प्लस क्यू का डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल ए फ्रॉम द सेंटर. तो हम लोग को हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा? हम लोग को हाइपोटेन्यूज मिलेगा दैट इज रूट ऑफ पाई ए स्क्वायर. इस साइड भी मिलेगा दैट इज रूट ऑफ पाई ए स्क्वायर. नाउ I'm going to say electric intensity E2 is equal to, it will be because of two charges, one is positive, other is negative, 1 upon 4 pi epsilon naught plus Q upon root of phi a square the whole square plus 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q root of phi a square the whole square. Now when I'm going to take 1 upon 4 pi epsilon naught and a square as common, I'm left with plus q upon phi minus q upon phi. अभी दोनों का आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को? 0. प्लस q upon phi माइनस q upon phi दोनों कैंसिल कर देगा, 0 हो जाएगा आंसर. मतलब E2 का आंसर मेरे को मिल गया 0. Now if you are going to see 0 is the minimum value, that is the reason हम लोग ने सेकंड प्लॉट चूज किया था, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन चूज किया था. लेकिन विदाउट सॉल्विंग अदर configuration we cannot conclude. So moving to our third configuration. Now third configuration, considering configuration 3. अभी configuration 3 में क्या था? एक नेगेटिव उस साइड था, नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव सेंटर में, एक पॉजिटिव दूसरे एंड में. अभी हम लोग ने देखा था डिस्टेंस है रूट ऑफ पाई ए स्क्वायर, रूट ऑफ पाई ए स्क्वायर, ए डिस्टेंस और इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस आ गया 2a. अभी 3 के वजह से मेरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगा दैट इज E3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस एंड का माइनस क्यू अपॉन रूट ऑफ पाई ए स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन, अभी प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या है? 2a, दैट इज 2a द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट ऑफ पाई ए स्क्वायर द होल स्क्वायर. I am left with q upon 4 pi epsilon naught a square inside the bracket minus 1 upon 5 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5 minus 1 upon 5 plus 1 upon 5 gets cancelled. I am left with 1 upon 4 that is 0.25 kq upon a square where k is 1 upon 4 pi epsilon naught. तो इसका भी मेरे को मिला 0.25. तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होगा, इसमें भी हम लोग का 0 से ज्यादा है. Moving to our fourth configuration, considering configuration 4. कॉन्फ़िगरेशन 4 देखेंगे, उस साइड है प्लस क्यू, इस साइड है प्लस क्यू, बीच में है माइनस क्यू. सॉल्विंग E4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन फाई रूट ऑफ फाई ए स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, बिकॉज अभी माइनस क्यू से डिस्टेंस है 2a
plus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon root of phi a square the whole square. I'm going to get q upon 4 pi epsilon naught a square inside the bracket 1 by 5 minus 1 by 4 plus 1 by 5. I'm going to get as 0.15 kq upon a square. मतलब ये भी वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है. तो अगर हम लोग ने चारों कॉन्फ़िगरेशन देखा, चारों में मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें मिला मेरे को, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज द वैल्यू वाज 0. सो आई एम गोइंग टू से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मिनिमम at point P if I am going to choose my second configuration. Hence, my answer was option number 2. Thank you.